हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सेलेन सक्सेस पॉइंट। मित्रों, आज आए हैं टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 91, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू का प्रयोग करके सेंटेंस बनाना है। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट थिंक। ऑप्शन ए, he was too excited and so he could not think. Option B, he was very too excited to think. Option C, he was too excited to think. Option D, he was much too excited to think. The right answer of this question is option C. जैसा कि हम जानते हैं कि सो के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है और फिर उसके बाद जब प्रोनाउन कंजक्शन दैट और प्रोनाउन कैन नॉट और कुड नॉट को हटाकर टू का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि सेंटेंस में दिया गया है, सो को हटाकर टू का प्रयोग किया गया है और कंजक्शन दैट और ही कुड नॉट को हटाकर टू का प्रयोग किया गया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। Question number 92. Tick the correctly punctuated sentence. Option A, they invoke gods who blessed them. Option B, they invoke gods who blessed them. Option C, they invoked gods who blessed them. Option D, they invoked gods who blessed them? Question mark. अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब कोई भी सेंटेंस समाप्त होता है तो उसके बाद में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसा कि सेंटेंस में भी फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया गया, ए में भी नहीं किया गया, बी में भी नहीं किया गया और ऑप्शन डी में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया गया, जो कि गलत है क्योंकि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव में नहीं है। केवल ऑप्शन सी दिया गया है करेक्ट है क्योंकि इसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। Question number 93. Tick the correctly punctuated sentence. Option A, the Ganga rises from the Himalayas. Option B, the Ganga rises from the Himalayas, full stop. Option C, the Ganga rises from the Himalayas, full stop. Option D, the Ganga rises from the Himalayas. अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में ऑप्शन ए में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया गया है, ऑप्शन डी में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये दोनों सेंटेंस सही पनक्चुएटेड नहीं है। फिर बी और सी में देखना है। बी में दिया गया गंगा का जी कैपिटल लेटर में है और हिमालय में भी एच कैपिटल लेटर में है, लेकिन इसमें गंगा कैपिटल लेटर में नहीं है और हिमालयस कैपिटल लेटर में, इसलिए ये भी सही नहीं है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयस। Question number 94. Othello killed Desdemona out of. Option A, anger. Option B, hatred. Option C, love. Option D, ignorance. The right answer of this question is option C, love. Othello killed Desdemona out of love, क्योंकि Othello Desdemona को बेवफा समझता था। Question number 95. Shakespeare wrote. Option A, romantic comedies. Option B, comedies of humors. Option C, comedies of manners. Option C, sentimental comedies. The right answer of this question is option A, romantic comedies. Example, Merchant of Venice. Shakespeare wrote romantic comedies. Question number 96. The wisest, the brightest, the meanest is said of. Option A, Dopé. Option B, Bacon. Option C, Milton. Option D, Dryden. The right answer of this question is option B. The wisest, the brightest and the meanest is said of Bacon. Question number 97. Complete the following sentence by selecting the correct option. Shakespeare was born at space. Option A, Stratford at Avon. Option B, Stratford upon Avon. Option C, Stratford in Avon. Option D, Stratford on Avon. The right answer of this question is option B.
Shakespeare was born at Stratford upon Avon. Question number 98. Our bodies are our gardens, to which our wills are gardeners. The above words from the speech of option A. Hamlet, option B. Iago, option C. Viola, option C. Brutus. The right answer of this question is option B. Iago. Iago said these words. Question number 99. Robert Southey was succeeded by Space as the poet laureate of England. Option A. Tennyson, option B. Arnold, option C. Wordsworth, option D. Shelley. The right answer of this question is option C. Wordsworth. Robert Southey was succeeded by Wordsworth as the poet laureate of England. Question number 100. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a peasant etherized upon a table. The above lines have been written in option A. unrhymed verse, option B. blank verse, option C. free verse, option D. iambic meter. The right answer of this question is option D. iambic meter. Let's go then, you and I is written in the iambic meter. Question number 101. Shorter Resorters is a thought-provoking work of option A. Carlyle, option B. William Morris, option C. Ruskin, option D. Swen. The right answer of this question is option C. Carlyle. Carlyle wrote Shorter Resorters. Question 9. 102. In the year 1637, Milton confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental poetic work. Select among the following the name of his friend to whom this information was given. Option A. Richard Powell, option B. Edward King, option C. Henry Love West, option D. Doherty. The right answer of this question is option B. Edward King. Question number 103. As flies to button, boys are we to the gods. They kill us for sport. The above lines by Shakespeare occur in the play. Option A. Julius Caesar, option B. Macbeth, option C. Hamlet, option D. King Lear. These lines has been taken from the Shakespeare's play King Lear, said by Gloucester. So the right answer of this question is option D. Question number 104. The woman character Delilah appears in option A. Dr. Faustus, option B. Samson Agonists, option C. 12th Night, option D. Macbeth. Option D. Macbeth. The right answer of this question is option B. Samson Agonists. Delilah was appeared in Samson Agonists. Question number 105. Galsworthy was awarded in the Nobel Prize for Literature in option A. 1931, option B. 1929, option C. 1930, option D. 1932. The right answer of this question is option D. John Galsworthy was awarded the Nobel Prize for the Literature in 1932. Question number 106. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers follow. For old unhappy, far off things, the battles long ago. The above lines occurs. The solitary reapers, option B. 3S Grew, option C. Michael, option D. The evening walk. The right answer of this question is option A. The solitary reaper. These lines have been taken from the solitary reaper written by William Wordsworth.
Question number 106. Will no one tell me what she sings? यह प्रश्न रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 107. डेथ ऑफ ए सेल्समैन इज रिटन बाई ऑप्शन ए फॉलकनर, ऑप्शन बी आर्थर मिलर, ऑप्शन सी ओ नील, ऑप्शन डी हेमिंगवे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी आर्थर मिलर। डेथ ऑफ सेल्समैन इज रिटन बाई आर्थर मिलर। Question number 108. Who made the devil's remark without Milton? Milton was of the devil's party without knowing it. Option A Tilliard, option B Coleridge, option C Blake, option D Christopher Hill. The right answer of this question is option C Blake. William Blake made the devil's remark without Milton. These lines, Milton was of the devil's party without knowing it, written by William Blake. So the right answer of this question is option C. Question number 109. The sounding cataract haunted me like passion. These lines occur in the poem. Option A resolution and independence, option B the table turned, option C the river Duden, option D Tintin Abbey. The right answer of this question is option The right answer of this question is option D Tintin Abbey, written by William Wordsworth. Question number 110. Find out the figure of speech in the following line. The waves thunders on the shore. Option A personification, option B onomatopoeia, option C hyperbole, option D metaphor. The right answer of this question is option B onomatopoeia. जैसा कि हम जानते हैं कि ओनोमेटोपिया में साउंड प्रदर्शित की जाती है और इस सेंटेंस में थंडर बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ दी गई है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 111. द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड टुक प्लेस विद द राइटिंग ऑफ कास्ट ए प्ले रिटन बाई ऑप्शन ए पिनेरो, ऑप्शन बी आर्थर जोन्स, ऑप्शन सी रॉबर्टसन, ऑप्शन डी एप्सन। The right answer of this question is Arthur Jones. Arthur Jones wrote a play named Caste. Question number 111. In which Charles Dickens novel we come across a character called Mr. McIver? Option A Tale of Two Cities, option B David Copperfield, option C Great Expectation, option D Oliver Twist. The right answer of this question is option B David Copperfield. चार्ल्स डिकेंस के नावल डेविड कॉपरफील्ड में मिस्टर मैकाइवर एक अलग थे। क्वेश्चन नंबर 113. टू यूज another person's thought writing as one is called. Option A plagiarism, option B pantheism, option C syllogism, option D parody. The right answer of this question is option A. Question number 114. Willing suspension of disbelief is a phrase coined by option A Dryden, option B Coleridge, option C T.S. Eliot, option D Arnold. The right answer of this question is option B Coleridge. Willing suspension of disbelief is a phrase coined by Coleridge. Question number 115. The Chaucerian stanza or rhyme royal
comprises option A 7 lines, option B 8 lines, option C 9 lines, option D 4 lines. The right answer of this question is option A 7 lines. There are 7 lines in the Chaucerian stanza or rhyme royal. Question number 116. The Little Man, written by Galsworthy, is a poem, a novel, a play, one-act play. The right answer of this question is option D. John Galsworthy wrote The Little Man, a one-act play. Question number 117. A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous is best expressed by the term. Option A, the comic relief. Option B, pathos. Option C, melodrama. Option D, paradox. The right answer of this question is option B, paradox. Question number 118. Who among the following was the first poet laureate officially appointed by the British sovereign? Option A, Ben Jonson. Option B, Robert Southey. Option C, Dryden. Option D, Wordsworth. The right answer of this question is option A, Ben Jonson. Question number 119. The phrase objective correlative has been coined by option A, Ezra Pound. Option B, Walt Whitman. Option C, T.S. Eliot. Option C, A.I. Richard. The right answer of this question is option C. The phrase objective correlative is coined by T.S. Eliot. Directions. Question number 120 and 121. Take the correct expressions. Question number 120. Option A, I am fed with you. Option B, I am fed up with you. Option C, I am fed up you. Option D, I am fed up with you. The right answer of this question is option B. मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, fed is followed by preposition up, यानी fed के बाद preposition up का प्रयोग किया जाता है. So the right answer of this question is option B. Question number 121. Option A, look before you doing. Option B, look before you work. Option C, look before you leave. Option D, look first and then leave. The right answer of this question is option C, look before you leave. Directions. Question number 122 to 125. Each of the following sentences is divided into 3 parts. Option A, option B and option C. Some of the sentences have errors in one part and some have none. Find out which part of the sentence has an error. If there is no error, mark D. Question number 122. Both Ram and Shyam, option A, were not present. Option B, in the classroom. Option C, no error. Option D. The right answer of this question is option D. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर. क्वेश्चन नंबर 123. It is really strange that he has not replied my letter. Question number my letter, no error. The right answer of this question is option C. replied के स्थान पर answered का प्रयोग किया जाएगा, answered. So the right answer of this question is option C. Question number 124. Many things, option A, have happened since. Option B, I have left the school. Option C, no error. Option D. The right answer of this question is option C. इस सेंटेंस में have का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा. जैसा कि दिया गया है कि many things have happened, यानी जब फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो सेकेंड सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, इसलिए हैव के स्थान पर कोई भी हैव
का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आई लेफ्ट द स्कूल होगा। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई लेफ्ट द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 125, ही टोल्ड मी, ऑप्शन ए, दैट ही इज नॉट, ऑप्शन बी, इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट, ऑप्शन सी, नो एरर, ऑप्शन डी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब सेंटेंस इनडायरेक्ट में होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच को बदल देते हैं और इस सेंटेंस में इज के स्थान पर वाज हो जाएगा। ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। जिन मित्रों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।